Hey everyone, welcome back to MK Tutorials. So our topic today is Introduction to BLAST. So now let us start with the video. The full form of BLAST is Basic Local Alignment Search Tool. And what is BLAST? So let us see what is the core function of BLAST. Firstly, core function of BLAST is to find a region of local similarity between a query sequence and the sequence that is present in the large database. Okay, and it helps us to identify evolutionary and functional relationship between sequences. That means जो हमारा query sequence है वो and sequences that is already feeded in large databases. Second thing is sequence similarity. That means कि हमारा जो query sequence है उसके अंदर जो भी local similarity है it is identified by this blast. So basically it finds the region of local similarity between my query sequence by searching it from the large databases quickly and accurately. So BLAST is a highly efficient search engine tool for the biological sequences which identifies connection that reveals evolutionary relationships and functional insights. There are six types of BLAST programs. First is BLAST-N, where DNA query is compared versus DNA databases. BLAST-P, that means P stands for protein here, protein query versus protein database. BLAST-X, that is translated nucleotide query versus protein database. T-BLAST-N, where protein query is searched versus translated nucleotide database. T-BLAST-X, where translated nucleotide query is searched against a translated nucleotide database, and PSI-BLAST, that is iterative search for distant protein relatives. So हर एक variant जो है it is tailored for specific sequence comparison needs. तो इसको हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब के आंसर्स हमको इसमें मिल सकते हैं. कैसे वर्क करता है ब्लास्ट? सो देर आर फोर स्टेप्स. फर्स्ट इज वर्ड सेगमेंटेशन, मतलब कि हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस होता है इट इज़ ब्रोकन इनटू शॉर्ट वर्ड्स. सेकंड इज डेटाबेस सर्च, जहाँ पर ये जो हमारा ब्रोकन शॉर्ट वर्ड्स वाले जो सीक्वेंस है तो ब्लास्ट क्या करता है, इट सर्चेस द डेटाबेस फॉर मैचिंग वर्ड्स दैट स्कोर अबव प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड. एंड थर्ड इज मैच एक्सटेंशन, जितने भी आइडेंटिफाइड मैचेस होते हैं इट इज एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन टू फाइंड हाई स्कोरिंग लोकल अलाइनमेंट्स. एंड फोर्थ इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ई वैल्यू जो होता है वो कैलकुलेट होता है टू रैंक द हिट्स एंड इट इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ द मैच अकरिंग बाय चांस. ये जो मेथोडिकल अप्रोच है इट इंश्योर्स रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सीक्वेंस सिमिलैरिटीज. तो ब्लास्ट कैसे रन करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ. फर्स्टली दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लास्ट की जो हम इनपुट करते. तो इनपुट हम करेंगे फास्टर सीक्वेंसेस जो कि हमको एनसीबीआई से मिलती है. तो फास्टर सीक्वेंस कैसे हम लोग सर्च करते हैं ये भी मैं बताऊंगी, डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, एंड हाउ टू फिट इट इन द ब्लास्ट वो भी मैं बताती हूँ. सो सेकेंडली यहाँ पर इफ़ यू कैन सी दिस इज ब्लास्ट आउटपुट. So BLAST output includes detailed alignments with scores, e-values and graphical summaries where color added bars visually indicate match quality. And यहाँ पे और भी चीज़ें होती है जैसे red signifying best matches and black representing the poorer quality alignment. So I'll show you how to identify that in BLAST. Well, जब हम लोग रन करेंगे BLAST तब हम लोग उसको सर्च करेंगे. What are the practical applications of BLAST? So firstly, gene identification, where we identify unknown genes or proteins through sequence similarity searches. We can do evolutionary studies by detecting evolutionarily conserved regions across different species. We can do genome annotation, where we are predicting protein functions. And diverse research, इसके अलावा भी medicine, agriculture एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इसका यूज़ होता है. In the next video, I'll show you that
how to run Blast. You can do hands-on exploration on Blast on this website, that is https://blast.ncbi.nlm.nih.gov. So this was all about the introduction of Blast. See you in the next video.